Good evening. Is my audio okay? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll wait for another 2 or 3 minutes and then we will start. Okay. Let us just wait. So, shall we start? My voice is audible? Yes, sir. Okay. Shall we start now? I think people will join as and when they can make themselves free. Okay. Good evening, everybody. So the last classes we have dealt with regarding basic goods. Now we are going to continue in that same basic goods, and today we are going to look at electronic demand, allotment of wagons, and preferential traffic schedule, what is called PTS. These are the important things which we should know as a goods clerk and also as an officer. अभी आज इसका बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे, है ना. सो पहले बात है कि ये जो मेरा क्लासेस को मिस किया है, ये जो मेरा पहले क्लासेस को मिस, ओके. सो जो मेरा पहले क्लासेस को मिस किया है, अभी एक अपॉर्चुनिटी है वो जो मेकअप करने के लिए. ओके. नाउ we have seen last time what is meant by wagon demand registration fee and how it is paid and when it is to be refunded to the customer. Today we will see the next step, that is the demand for wagons. What do you mean by the demand for wagons? We know that whenever a customer wishes to book a consignment, whenever a customer wishes to book a consignment, he just cannot go to the goods shed and ask for wagons. Okay, like ticketing. जैसे टिकट खरीदने के लिए वो काउंटर में जाता है, वो वैसे जाके हम वैगन्स को पूछने का होता नहीं, क्योंकि वैगन्स दूसरा जगह से लेके आना है और उसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है. इसके लिए हम जो कस्टमर्स है उसको बोल रहे कि जब आपका वैगन्स चाहिए आप इसका इंडेंट करना है. इसका मतलब है पहले ही पूछना
कि आप क्या माल भेजेगा, कब भेजेगा, कहाँ को भेजेगा और कितना वैगन्स आपको चाहिए। ये इन सब जो चीज़ें हैं इसके लिए हम बोलते हैं कि पहले आप वैगन को इंडेंट करना है। ओके, वी आर टेलिंग द पार्टी दैट वी नीड दीज डिटेल्स बिफोर वी स्टार्ट द process of giving the wagon. Okay, that is called wagon demand registration fee. Once he pays the wagon demand registration fee, we are going to supply the wagon. Now when he asked for the wagon, we are collecting a money called WDRF, and that is called raising a demand. आजकल ये जो डिमांड है वो ऑनलाइन ही हो रहा है। मैं आपका उसका जानकारी दूंगा स्क्रीन शेयर करके। आई एम नाउ शेयरिंग माई स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Okay, so the first thing we are going to see is the question of wagon demand registration or electronic demand registration. Okay, now 2014 the registration of demand for wagons electronically through Foy's web portal started, and that day a circular was issued on 23rd of September 2014. That is almost 10 years back we started this e-demand. So you can imagine that Indian Railways is one of the forerunners of computerized reservations around the world. We are one of the forerunners, and our methods of booking tickets has been appreciated by many railways across the world, and they have used our platform what Chris has developed. Like that, Chris has developed one more called FOIS और फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें एक फैसिलिटी है इलेक्ट्रॉनिकली आपका वैगन का डिमांड करने के लिए, है ना। इसका बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। ये देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड फॉर थ्रू फॉइस वेब पोर्टल। ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाट इट इज। So what they want to say is that customers wishing to transport their goods by rail submit a forwarding note to the goods clerk with the following particulars: name, address, name and address of the consignor, consignee, description, commodity, number of articles, quantity, number of wagons required, type of wagons required, किस स्टेशन से कहाँ को किस रूट में भेजना। The goods clerk, having satisfied himself that the demand can be registered, collects the WDRF where applicable and enters the particulars in the wagon demand or priority register. This requires the customer to physically visit the goods shed, which is a tedious and time consuming job. ये है प्रैक्टिस 2.0 है प्रैक्टिस का बारे में। मतलब यहाँ तक क्या चल रहा था, अभी क्या है 3.0 में अभी हम पढ़ रहे हैं। The tremendous progress in information and communication technology has now made it feasible to introduce registration of demand through web that is expected to make the process of registering demand simpler, convenient, speedier, transparent। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ तक हम कर रहा था वो हम बदलने के लिए चाहता है। क्या बदलना? अभी ये बदलना कि जो हम वैगन का डिमांड आज तक हम स्टेशन को जाके कर रहे थे, अभी हम क्या करेंगे, उधर ही हम स्टेशन का जाने का ज़रूरत निकाल के कस्टमर ने घर में बैठ के ही, एक जैसे हम IRCTC में टिकट खरीदने के लिए किया है वैसे ही हम इधर भी फैसिलिटी दिया है कस्टमर को। ये डिमांड जो है वैगन का उसको उधर ऑनलाइन ही रेज करने के लिए, है ना। सो इसका क्या फ़ायदा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? सिंपलर, कन्वीनियंट, स्पीडियर, ट्रांसपेरेंट। आसान होगा, कन्वीनियंट होगा, जल्दी भी होगा क्योंकि इंस्टेंट डिमांड रजिस्टर हो सकता है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? गुड सुपरवाइज़र ने किसी का डिमांड का आगे नीचे करने का सवाल नहीं आता क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर दे देता। ओके, so this will be done by enabling on the web an electronic demand note. The electronic demand note is nothing but that part of the forwarding note which is currently used for registration of demand. आपको मालूम ही होगा, पिछले क्लास में हम देखा कि फॉरवर्डिंग नोट में 2 पोर्शंस होगा। जो
आगे पोर्शन है कस्टमर ने फिलअप करता है, जो पीछे पोर्शन है वो हम रेलवे फिल करते हैं। ये पूरा का काम हम कंप्यूटर में ही आजकल करेंगे। ओके, सो देन what we are going to do is we will fast forward to whatever is required for us. Registration of customers availing ERD facility, point number 5.0. So क्या बोल रहे हैं, customers wishing to avail the facility of electronic demand registration will be required to pre-register themselves on the e-demand module of FOIS and get their credentials verified by the railway administration by presenting the relevant documents in original to the office of senior DCM of any division close to the customer for final registration. इसका मतलब क्या होगा, जो कस्टमर वो वैगन्स लेने के लिए चाहता है, डिमांड करने चाहता है, वो डायरेक्ट वेबसाइट में जाके उसका नाम और उसका कंपनी का इनकम टैक्स पर्टिकुलर्स वो सब दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन ने सीनियर डीसीएम ने करेगा। सीनियर डीसीएम ने रजिस्ट्रेशन करके उसको हमको देगा। Okay, so this is the procedure. Now I will just take 2 minutes of time, go to that portal and I will show you. Okay, I will just show you the portal where you can register the demand. E-offer registration. Is my screen visible? Am I audible? Yes sir, yes. स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिखा है? यस सर। स्क्रीन में देखो, इंडियन रेलवेज प्राउडली अनाउंस द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ वैगन डिमांड रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू एसबीआई ई पेमेंट गेटवे फॉर इट्स ई पेमेंट। इसका मतलब है इधर हम रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का बाद ये जो है, ये है होम पेज, ये है हमारा फॉइस indianrailways.gov.in रेल सहाय। ये रेल सहाय में हम पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कर सकता है घर में बैठ के ही। रेलवे स्टेशन का जाने का, पैसे भरने का, उन सब का फॉरवर्डिंग नोट देने का सबका सवाल ही नहीं आता, पूरा ऑनलाइन में ही कर देता। ओके, सो इसमें हम देखेंगे क्या क्या है फॉइस में। जो आप एग्ज़ाम में जाएगा, आप यदि टीटी हो, टीसी हो, बुकिंग क्लर्क हो, पार्सल क्लर्क हो, ऑफिस क्लर्क, ऑफिस सुपरेंट, एनीबडी, गुड्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुड्स से हमारा 70% का रेवेन्यू आ रहा है, और एग्ज़ाम में भी प्रतिशत 70% ऑफ द क्वेश्चंस गुड्स में ही होगा, है ना। इसके लिए आप गुड्स सीखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, अमूल्य होगा। ये जो न्यू टू रेल है, मतलब आप नया रेलवे में आया तो बुकिंग प्रोसेस क्या है, सूटेबल टर्मिनल, इसका मतलब कहाँ आप लोड कर सकते हैं उसका बारे में जानकारी, लोडिंग अनलोडिंग कहाँ करना, वैगन सेलेक्ट करना, एक्सपेक्टेड फ्रेट कैलकुलेट करना, इसका हम जानकारी ले सकेंगे। मगर अब हमारा क्लास है ई रजिस्ट्रेशन का, इधर है यूज़र रजिस्ट्रेशन। ओके, यूज़र रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया तो न्यू यूज़र, प्लीज़ म्यूट योर माइक्रोफोन्स, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज में जाता है, और इधर हम हमारा कस्टमर का पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, अल्टरनेट आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब दिया तो नेक्स्ट स्क्रीन में आप ये सब लिखा तो हम लिख के कुछ, let us see what we will get. I'll just put something. Let me put something. Okay, so when I go to the next screen, so when I go to the next screen, it will ask the PAN card, Aadhaar card, ID card number, if it is whatever is the ID card number. Then see here, what is that ID card number? The ID card number is, please ensure that the company is registered with the Indian Railways. Okay, so first you have to register your company in the Indian Railways. That identity card number you have to put. Then you have to choose your picture. That means you have to give your own photograph, then the PAN card photograph, Aadhaar card photograph, identity card photograph, and then 1 or 2 security questions. After finishing all these,
your registration will be complete. You are not demanding a wagon still, only your registration is being completed, and after the registration is complete you can register your demand online. Now I am going to that screen. Before registering the demand, you have to become a customer. To become a customer, you have to create a user id, देन यू हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कुछ हम बता दिया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ, आपका जो कस्टमर का आईडी है उसका फोटोग्राफ, वो सब दिया तो बाद में आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा आपका ईमेल में. वो यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा आने का बाद, आप साइन इन करने का बाद आप डिमांड रख सकता है हमारा रेलवे का ऊपर. आप डिमांड कर सकता है मुझे क्या होना है, कितना वैगन होना, वो सब का वो जो पर्टिकुलर्स है. ओके, नाउ registration of demand for wagons electronically has been implemented. The concept, register a demand for the wagons electronically through voice, है ना, not required to go physically to the goods shed. ERD is simpler, convenient, speedier and transparent. प्री रजिस्ट्रेशन अभी देखा क्या क्या होना, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशंस, जीएसटी नंबर, आधार नंबर, ऑथराइजेशन लेटर, वो सब अपलोड करना. सीनियर डीसीएम ने सिस्टम शैल वैलिडेट द अकाउंट एंड डायरेक्ट द कस्टमर टू अप्रोच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज सीनियर डीसीएम. सीनियर डीसीएम का पास ये फाइल जाता है इलेक्ट्रॉनिकली. उधर इलेक्ट्रॉनिकली सीनियर डीसीएम का पास फाइल जाने का बाद सीनियर डीसीएम ने क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा. वेरिफिकेशन क्या होगा, the requirement of the customer to visit senior DCM office for verification has been done away with. आप जो है आप जो कस्टमर सीनियर डीसीएम का पास जाना है वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन को क्या क्या चाहिए, द कस्टमर विल अपलोड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड इंडिकेट हिज चॉइस ऑफ डिवीजन. सीनियर डीसीएम विल डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन. सीनियर डीसीएम विल कंफर्म और रिजेक्ट. सीनियर डीसीएम ने कब रिजेक्ट करेगा, सीनियर डीसीएम ने रिजेक्ट करेगा कब, जब वो देखता है कि जो पर्टिकुलर्स दिया गया है वो ठीक नहीं है, या वो जो कस्टमर है वो उसका ऊपर कुछ विजिलेंस का या सीबीआई का या कुछ वैसा प्रोब चल रहा है और वो कस्टमर इज़ नॉट ए जेन्युइन कस्टमर. वेरी रेयर केसेस में सीनियर डीसीएम इसका रिजेक्ट भी कर सकता है. ओके, देन इफ रिजेक्टेड कस्टमर विल गेट ए मैसेज टू द इफेक्ट विथ रीजंस का साथ उसको आता है. इफ एक्सेप्टेड, यदि वो एक्सेप्ट कर दिया, सीनियर डीसीएम विल इनपुट द एप्लीकेबल कमोडिटी एंड कैटेगरी. वो कैटेगरी का और जो कमोडिटी का एक एक कमोडिटी का एक एक कैटेगरी है वो कस्टमर ने अपडेट करता. आफ्टर सेविंग ऑल द डिटेल्स इन सब काइंड, सेल्वी प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन. Selvi, mute your microphone. Okay, after saving all the details, the customer will receive a user ID and OTP as specified by senior DCM through email and SMS for the registered mobile. Okay, आपका जो IRCTC में करता है उसको मन में रखो बस. वैसे ही सीनियर डीसीएम से उधर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आप IRCTC में रजिस्टर करता है, इधर सीनियर डीसीएम ने खुद आपका जो सीनियर डीसीएम है उस ज्यूरिस्डिक्शन का, वो सीनियर डीसीएम ने आपका वेरीफाई करके ये जो है वो देता है. ऑन द फर्स्ट लॉगिन कस्टमर हैज़ टू मैंडेटरीली चेंज हिज पासवर्ड विच वुड कंप्लीट द कस्टमर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस. ये पूरा खत्म होगा. आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन कस्टमर विल बिकम एन ऑथराइज्ड यूजर. समझ में है ना, ये पूरा वेरिफिकेशन के बाद ही वो ई डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक डिमांड को रेज करता है. प्रोसीजर फॉर ई डिमांड रजिस्ट्रेशन, अभी वो ऑथराइज्ड यूजर हो गया. ऑथराइज्ड यूजर होने के बाद वो डिमांड को रेज करना. ओके, यहाँ तक जो मैं पढ़ा है इसमें कुछ शक है तो आप पूछ सकते हैं. 5 मिनट का टाइम देता हूँ, पूछ लो. जहां तक मैं पढ़ा किसी को कुछ किसी शक है तो पूछ सकता है. Anybody having doubts you can ask up to what I have taught now. हेलो सर. Yes, tell me. कितने दिनों के अंदर सीनियर
कितने दिनों के अंदर सीनियर डीसीएम पासवर्ड भेज देंगे यूजर आजकल आईडी? आजकल हमारा गुड्स सेक्शन इतना अच्छा है कि शायद एक दिन में ही हो सकता है। यदि बड़ा कस्टमर है उसी दिन 1 घंटा में या 2 घंटा में भी हो सकता है, मगर इसको क्या है, वो जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वो रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा ठीक होना है। और सीनियर डीसीएम शुड know that whatever income tax certificates are given, whatever is given, जेन्युइन होना। यदि वो जेन्युइन है, सीनियर डीसीएम ने एक एक बार क्या करेगा, एक कमर्शियल इंस्पेक्टर जो है, गुड्स इंस्पेक्टर, उसको भेजेगा कहाँ को, जो कस्टमर का दुकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, उधर भी भेज सकता है कि देखो भाई, इधर एक आदमी ने पूछा है गुड्स बुक करने के लिए, जाके उधर जानकारी ले लो कि कितना वैगन दे सकता है महीने को, और वो कितना अच्छा कस्टमर है या नहीं, या गलत से चुप से हमारा टाइम बर्बाद करनी है कर रहे, ये सब डिपेंड्स ऑन द सीनियर डीसीएम, डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। मैं खुद देखा है कि एक दिन में भी होता है और एक हफ्ता भी। मैक्सिमम लिमिट? नो, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू। Okay, any other questions? Any other questions anybody is having? Anybody? Okay, shall we go ahead? I think people have understood or not at all understood. One of them is true. I take it that people have understood. Okay, now इसका बाद क्या करेगा, यूजर जब रजिस्ट्रेशन हो गया है, अभी क्या करता है, वो रजिस्टर कर सकता है वैगन को। वैगन रजिस्टर करने का पहले ये सब करना है। अभी रजिस्ट्रेशन तो हो गया पार्टी का, अभी क्या करना है, वैगन का वो पूछ सकता है। इसका प्रोसीजर क्या है, ऑथराइज्ड यूजर शैल लॉग इन इनटू द ई डिमांड मॉड्यूल ऑफ फॉइस। इसमें दो है, सैंक्शन प्रोग्राम, जनरल कस्टमर। सैंक्शनड प्रोग्राम मतलब है ये जो कोल, आयरन स्टील, वो सबका है, वो पहले ही इस महीने में इतना ही रेट भेजेगा, वो सबका है, वो हमारा जानकारी के लिए रखिए, इसका डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। सैंक्शनड प्रोग्राम को, वो जो सैंक्शन प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करके कस्टमर ने, म्यूट योर माइक्रोफोन प्लीज़, सेलेक्ट करके करेगा। मगर हम बात करें आज जनरल कस्टमर का बारे में, उसको शैल डायरेक्टली रजिस्टर द डिमांड इन द सिस्टम। द डिमांड रजिस्ट्रेशन इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। इसमें क्या होता है, डिटेल सेव होता है और कंफर्म करता है WDRF लेके। यदि ये जो डिमांड डिटेल्स है सिस्टम में सेव करके, बाद में जो कस्टमर्स वैगन पूछ रहे हैं, यदि 48 BCN राइस भेजना है, कस्टमर पूछता है 48 BCN होना राइस भेजने के लिए, या 58 BCN HL होना, या 50 BRN वैगन होना। काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन्स यार, व्हाट इज दिस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। ओके, सो यदि हो गया और ये WDRF का पेज को चले जाता है, WDRF पेज में आप पेमेंट कर सकता है। WDRF कैन बी पेड बाय ई पेमेंट और IRCTC और POS मशीन। ये तीन क्या है, ई पेमेंट का मतलब है आप जो आपका बैंक का साथ आपका जो कस्टमर का कनेक्शन है, बैंक, रेलवे और कस्टमर तीनों मिलके भी। कृष्णा राव, म्यूट योर माइक्रोफोन। We are all educated, we are all matured, I can't go on telling in the class. Okay, payment of WDRF. WDRF can be paid by e-payment. E-payment का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, जो आप सबको मालूम है। IRCTC गेटवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस, इन जो गेटवे है वहाँ भी हम जाके इसका पैसे भर सकेगा। या POS मशीन। POS मशीन क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहा है, आप सब देखा है। जो POS मशीन है उसमें आप कार्ड अंदर डाल के, पेट्रोल बंक में सब रहता है, ये POS मशीन होगा। ये POS मशीन यूज़ करके भी स्टेशन पे आप पैसे WDRF पेमेंट करेगा। आप दिस Zoom मीटिंग विल एंड इन 10 minutes
we will rejoin in the same link. Okay, now after payment of WDRF, ये WDRF पूरा भरने का बाद customer will receive a PDF document या e-demand confirmation slip in his email, okay, which shall be submitted with the forwarding note. Okay, ये please mute यार, so much of Not noise. able Ah, okay, okay. From 1/11/2022 इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड इज कंपल्सरी, मैंडेटरी. मतलब हम गुड्स में कोई वैगन नहीं बुक करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिमांड नहीं रेज किया. मैनुअल डिमांड हैज़ बीन डिस्पेंस्ड अवे विथ. नो मैनुअल डिमांड आफ्टर 1/11/2022. नवंबर 1 2022 से हम पूरा जो WDRF है ऑनलाइन कर दिया है. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक डिमांड रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड कैसा होगा? ऐसा होगा डिमांड रजिस्ट्रेशन, और ये जो कॉलम्स है वो है डिमांड नंबर, डिमांड डेट एंड टाइम, और कंजाइनर का नाम, और कमोडिटी. FG का मतलब फूड ग्रेन है, CEMT का मतलब सीमेंट है, टाइप ऑफ रेक BCN HL आप देख सकेगा, ये सब है हमारा फॉइस में ही आएगा. ओके, सो दिस इज़ द Freight Operation Information System e-demand registration. E-demand is faster, convenient and secure. इधर लॉगिन करना आपका e-demand अकाउंट का साथ यूज़र नेम पासवर्ड जो सीनियर DCM ने भेजेगा, और एक टाइम आप लॉगिन करने का बाद दूसरा टाइम से सीनियर DCM का पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा. आपका एक नया पासवर्ड आप जो चाहता है वो आप कर सकता है, और एक कैप्चा एंटर करने का बाद आप लॉगिन करके आप डिमांड रेज कर सकता है. This is about e-demand. Okay, this is the electronic demand which is becoming very famous, and which many people find it very convenient to use. Okay, so that is the facility that railway has given. It's a very important thing for you people to know, because from 1/11/2022 physical going to the station is dispensed away with. I will share you this PDF immediately after the class. So once again you can go, this PDF is 42 pages, you need not read the full one, you can just skim through it. If you have any doubts on that, you can ask me. Any other doubts are there on this one till now? Wagon demand, regarding the demand on website, anybody having any doubts? किसी को कुछ शक है? Sir, हाँ, yes, Selvi, tell me. sorry sir, I joined the class a little late. So can I just get a brief of everything? Okay, let me just give you a small recap of it. Okay, I think a small recap will be Thank very you. good. Somebody is telling no sir, everything clear. Okay, because this class will close in 5 or 6 minutes, so I think we'll join back there. But anyways, another 6 minutes is there, by then I'll finish the recap. Okay, let me be very succinct and very conscriptly tell you. E-demand, previously what we were doing, the party used to go to the station, fill up a form called the wagon demand forwarding note, give it there, and then based on that the goods clerk will collect the money called wagon demand registration fee, and he will raise a demand and he'll give you a receipt. Clear? Shall we clear? Correct. Okay. Yes sir, yes sir. Now what we are doing is we have changed it a little. We have made it all online. Why we have made it online? We have made it online because it will be quick, it will be secure, it will be transparent, it will be instant. Now good sheds were having the problem of timing. Yes, all the good sheds were closing at 10 o'clock, 6 o'clock to 22 hours. Then party had to come and then book the demand. He has to stand in the queue, 3 or 4 people will be there, he has to stand in the queue and he has to book a demand, and then we do not know if the goods clerk is correctly collecting the money or not, giving him the proper receipt or not, and whether he is putting him in the correct line or not, maybe he is putting somebody else ahead of you. All these things were there in the manual WDRF. But in this e-demand, all that is done away with. Sitting at home, the customer can book his wagons. So for the
For the customer to book his wag for the customer, come on, please mute. For the customer to book the wagons, what is important is that Manjunatha DL, who is Manjunatha? Okay, for the customer to book the wagon, the most important thing is that he should make a payment called the wagon demand registration fee, which you have discussed in the last class. It is mandatory except for a few customers. So what he has to do, how he has to make the payment, that payment also can be done online. So before he books the wagon, he has to register his name. Okay, he cannot simply walk in into the website and book it. Before he becomes a customer, he has to take the permission of senior DCM that he is a genuine customer. For that, there is a process. The process is, first of all, he'll upload his PAN, Aadhaar, company for letterhead, income tax certificates, everything he will upload on the website. Senior DCM will self-attested. He need not go to the office at all. Senior DCM will verify all the documents, and then he will give him a user ID and password. That user ID and password, the customer has to log in onto the net, and the first time he has to change the password to whatever he wants. From then on, he becomes a customer of the railways for a particular commodity or for a group of commodities, and he can start indenting wagons. To start indenting the wagons, he will go to our files web page. He will put his username and password which he has chosen himself for the second time. Then he will start to ask for the number of wagons he wants, when he wants, what type of wagons he wants, what he is going to load, what is the name of the consignor, what is the name of the consignee, all those things he will load. He will fill everything. Then the WDRF will also be collected online through the payment gateways, either an e-payment or through our IRCTC or through point of sale machines at the railway stations. Okay, once he does that, the demand is made alive, and a PDF will be sent to the customer telling that yes, your demand is booked. The same copy will come to the railway officials also for allotment of wagons, which we are going to talk after this. After this 10 minutes is over, we are going to do that. Any other doubts, Selvi? Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. पार्टी डिवीजन वाइज रजिस्टर होती है. यस, पार्टी कैन इंडेंट, पार्टी कैन गो टू द नियरेस्ट सीनियर डीसीएम. पार्टी ने जो सीनियर डीसीएम उसका कारखाना का या फैक्ट्री का या दुकान का नज़दीक है, ज्यूरिस्डिक्शन पे है, वहाँ जाके उसका अर्जी सबमिट करेगा ऑनलाइन ही. ऑनलाइन प्लीज़. उसका मतलब है जो उसका कारखाना, फैक्ट्री या दुकान किस, यदि वो बैंगलोर सिटी में है, सीनियर डीसीएम बैंगलोर होगा. यदि मैसूर में हो मैसूर, उदयपुर में हो उदयपुर, वैसे उसका सीनियर डीसीएम जो नज़दीक पे है उसको सबमिट करना है. मतलब नहीं है कि जो मैं बैंगलोर में बैठ के दिल्ली का सीनियर डीसीएम का मैं परमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार, मेरा दुकान का एड्रेस सब बैंगलोर में है. यदि इंस्पेक्शन को जाना है, एक कमर्शियल इंस्पेक्टर ने, वो सीनियर डीसीएम बैंगलोर ही भेजेगा, है ना. इसके लिए दूसरा सीनियर डीसीएम का आपका अर्जी गया तो फ़ायदा नहीं है. आप ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ है वहाँ भेजना पड़ेगा. ओके, शेल वी एनी अदर डाउट्स? 1 minute is there. We will take any doubts. Clear, sir. Okay, anybody else? Anybody else? Sandhya, you are always doubt seeker. Anybody? मतलब अलग अलग डिवीजन में भी रजिस्टर करेगा होगा. यस, nowadays धर्मात्मा, नाउ वी हैव चेंज्ड अ लॉट. धर्मात्मा, वी हैव टोल्ड दैट यदि एक जगह में रजिस्टर किया तो बस वो कहीं भी लोडिंग कर सकता है. यदि आप समझो कि एक बड़ा कारखाना 1 मिनट का अंदर है, आई विल क्लोज दिस सेशन. नेक्स्ट जूम में मैं डिसाइड करूंगा. यू प्लीज लॉग इन देयर अगेन. वी विल क्विट दिस. यू प्लीज लॉग इन देयर अगेन.
Shall we start? Yes, sir. Okay. So yeah, again I'll have to share my screen. Share screen. Yeah, fantastic. Yeah, I think. Chalo. Let me minimize it. Let me go to this e demand and then maximize it and minimize this fellow. Okay. So now this is the flow chart. कोई ने कुछ प्रश्न पूछा. हाँ, अभी कोई पूछा कि धर्मात्मा आप पूछा कि सर क्या ये सीनेडिसियम हर सीनेडिसियम को आप एप्लीकेशन देना पड़ेगा? नहीं है. यदि आप समझो कि टोयोटा कार्स है या मारुति कार्स है, वो हर जगह से कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, चार जगह का सीनेडिसियम का वो रिक्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है. एक ही एक जगह करके उसको शेयर किया तो बस है. ओके, सो दैट इज़ द दिस थिंग. अभी एक मेरा पास 7 पेज का यूज़र गाइडलाइंस भी है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं. मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको. हाँ, अभी आप पढ़ सकते हैं. स्टेप्स टू फॉलो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई डिमांड, ये क्या है ये पूरा आपको भी भेजूंगा मैं. ये कैसे है फ्लो चार्ट, दिस इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट. ये फ्लो चार्ट में आप देख सकेंगे कि कस्टमर स्क्रीन में क्या क्या देखेगा और क्या क्या फिलअप करना है. ये फ्लो चार्ट भी आपको मैं शेयर करूँगा ये क्लास होने का तुरंत बाद, क्योंकि आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं भेज रहा हूँ बहुत अमूल्य है. यू हैव टू यूज़. आपका टाइम जो है, आप कभी भी आपका जब आधा घंटा मिलता है, आप सब टीटीज है बहुत फ्री होता है, जब चार्ट चेक करने का बाद 2-3 घंटा आप चुपचाप इसका साथ उसका साथ बातचीत करते रहेगा, वो मत करो. ये जो आजकल आप सबका पास स्मार्टफोन्स होगा, आप वो स्मार्टफोन में आप ये सब पढ़ लो जब क्योंकि वो जब आप प्रदीप म्यूट. सो जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जाता है बहुत आसान होगा और आप विथ डिस्टिंक्शन पास करेगा. ओके, शेल वी गो फर्दर नाउ? शेल वी गो फर्दर? we'll go for allotment of wagons. Okay, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now we will take up the question of allotment of wagons. Allotment of wagons का मतलब क्या है? Who can tell me what is allotment of wagons? allotment का मतलब क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? allotment आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है रेलवे Issuing of wagons to the persons who have demanded them. Okay. और कोई? Any others? रजिस्टर कस्टमर के प्रायोरिटी के आधार पर रेलवे के द्वारा जो है अलॉटमेंट किया जाता है. हाँ. Okay, Satish and Selvi both are correct partially. Okay, let me physically wagons. यस नजीब, वैगन्स को हमारा जो भारत देश में है वो पूरा का पूरा वैगन्स को इकट्ठा करके किसको देना पहले, क्यों देना पहले और कब देना, कितना देना, मिक्सड स्टॉक देना या नहीं, ओपन वैगन देना या कवर्ड वैगन देना, कब देना, कहाँ देना, कैसे देना, इन सब का आज हम पढ़ेंगे. ये है प्रेफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल. यदि आपका आप सब टीटीज है, कमर्शियल क्लर्क्स हैं, बुकिंग क्लर्क्स है, यदि आपका बेटा या बेटी या बीवी या बहन या पापा या मम्मा अर्जेंट जाना है गाँव को और टिकट पूरा वेटिंग लिस्ट में है, क्या करेगा? एनीबॉडी? प्रीमियम तत्काल लेंगे. प्रीमियम तत्काल लेंगे. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके, तत्काल लेगा. ओके, तत्काल भी पूरा हो गया. इमरजेंसी कोटा. हाँ, वही आया बात है इमरजेंसी कोटा. प्रीमियम तत्काल लेंगे. इमरजेंसी कोटा लेंगे, है ना? इमरजेंसी कोटा लेंगे. क्यों इमरजेंसी कोटा लेगा भाई? इमरजेंसी कोटा क्यों रखा है रेलवे में? इसका जरूरत क्या है? कंफर्मेशन के लिए. इमरजेंसी कोटा, हाँ टेल मी. इमरजेंसी कोटा इसके लिए ज़रूरी है कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड पूरा कर दिया तो
कोई बहुत बहुत अवसर में अर्जेंट में जाना है तो उसको वो अर्जेंसी फुलफिल करने का हमारा पास थोड़ा रास्ता होना है. यस और नो? Yes. So what we do, we keep a little amount, certain amount of berths for that emergency. We call it emergency quota. Right. मैं और एक छोटा कहानी बोलता हूँ. वो कहानी है. वो कहानी सुनने के बाद ये प्रेफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल का आपका मन में और ज़्यादा जाएगा. पढ़न में हिंदी वो इतना अच्छा नहीं है, बट यू हैव टू लिव विथ इट. सो आज मैं छोटा कहानी ये बोल रहा हूँ. मेरा घर में मेरा बेटा जो है उसका मोबाइल फ़ोन टूट गया और वो बोल रहे कि पापा अगला महीने जब आपका सैलरी आ रहा है पहले मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए. और मेरा बेटी ने बोलते ही पापा ये सब इकट्ठा आके बोलता नहीं. जब मैं और वो अकेला रहता है ना उस टाइम को आके बोलता है पापा पापा मुझे एक फ़ोन चाहिए, मेरा टूट गया है, माँ को मत बोलो. और बेटी आके क्या बोलते हैं, पापा पापा मेरा जो कॉलेज का फंक्शन है इसी नेक्स्ट महीने में, इसके लिए एक बहुत अच्छा ड्रेस चाहिए क्योंकि मेरा जो दोस्त लोग है वो बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आता है. मुझे जो ड्रेस है मेरा पास वो बहुत पुराना हो गया है, नया ड्रेस होना है. उसको 5,000 रुपये या 5 से 10,000 रुपये तक का अच्छा ड्रेस लेना, शू लेना, वॉच लेना. और बीवी ने क्या बोलता है जब मैं सो रहा हूँ उसके साथ, अरे भाई मुझे एक इम्पॉर्टेंट ये है जो मेरा काम को जा रहा हूँ उधर एक चीटी डाल रहे 10,000 का महीने का, वो मैं डालने के लिए चाहता हूँ. तो आप कृपया नेक्स्ट मंथ 10,000 रुपये मुझे दे दिए. नेक्स्ट अगला महीने बहुत अच्छा है महीना, मैं 10,000 चीटी स्टार्ट करने के लिए, बेनिफिट फंड स्टार्ट करने के लिए चाहता. और जो आपका पापा है, पापा भी घर पे है, पापा आके बोलता है बेटा जो मेरा फ्रेंड्स है जो मैं काम कर रहा था वो सब यूनियन वो सब इकट्ठा करके बाहर कहीं जाने के लिए सोच रहे, काशी उधर जाना है, काशी को जाना है, मुझे 15,000 रुपये चाहिए. ओके, यहाँ तक कहानी सुना ना. अभी क्या होगा मंथ का अंतिम में अगस्त 28 को क्या होगा, आपका माँ जो है वो गिर के पाँव टूट गया और उसका इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर का पास लेने का बाद बोलता है एक सर्जरी करना है भाई. सर्जरी का कॉस्ट होगा करीबन 50,000 रुपये. आपका पास इंश्योरेंस तो नहीं है, 50,000 रुपये उसका होना है. अभी आप सितंबर 1 में जो सैलरी आता है वो किसके लिए प्रयोग करेगा? यदि फोन खरीदते या बेटी का ड्रेस खरीदते या जो बीवी का चीट के लिए डालता है या पापा का जो यात्रा जाना है उसके देता है या आपका माँ का इलाज देता है? माँ के लिए डेफिनेटली. हाँ, यही है ना जो हम सोच सकता नहीं कि कब हमारा वो जो अवश्य होता है. इसके लिए हम जो पहले पूछा, बेटा ने पहले पूछ दिया. सो क्या माँ को जाके बोलते हैं नहीं माँ मेरा बेटा पहले पूछा है, आपको भी मेरा बेटा तो बहुत लव है, अफेक्शन है क्योंकि ग्रैंडसन है, यू गॉट टू मच अफेक्शन ऑन हिम. आपका जो टूटा हुआ पाँव है वो रख के ही 2-3 महीना एडजस्ट करो. मैं इस महीने तो मेरा बेटा का फ़ोन लेना, अगला महीना बेटी का ड्रेस देना, सब देखने का बाद आपका इलाज करूँगा. बोल सकते हैं नहीं ना. आपका जो माँ का इलाज है वो प्राइमरी आ जाता. इसका मतलब है जो लास्ट आया है उसका जो इम्पोर्टेंस हो जाता. हाँ या नहीं? यस और नो? हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. So in this what we learned that just because you have registered first, it does not mean to say that the wagons should be given first to you. You have registered first, we agree. But there are certain circumstances when we have to say no, you don't stand on your legs that you just because you registered first we have to give the first rake to you. There are some priorities which we have. There are some other important things which we have to look after, only then we will give it to you. Why?
Because Indian Railways is a social organization, number one. Number two, Indian Railways is owned by the government of India, which is nothing but for the people, of the people, and by the people of the Republic of India. That means the citizens of India own it and they can decide which takes priority. सपोज आप एक बैंक का बड़ा लाइन में खड़ा है और आप देख रहे हैं कि एक बहुत बहुत बुढ़ी लेडी जो हो 85 ईयर्स ओल्ड, वो पेंशन के लिए पूछने के लिए आता है और जो लाइन है बहुत लंबा है. क्या आप भी बोलेगा कि वो बुढ़ी को लाइन में खड़ो, या आप बोलेगा माँ जी आप आगे जाइए, आप पूछ के आइए? विच विल यू डू? माँ जी को आगे जाने देंगे. माँ जी का आगे जाने देंगे, है ना? दैट इज द राइट थिंग टू डू. लाइक दैट इन आवर railways, why I am telling all these stories for you to make you understand. Like that in our railways also, we cannot say that just because some customer has applied first, we have to give him first. That is the normal logical way of thinking, but logic will not work always. Sometimes we have to think out of the box. We have to think that there is something else apart from it. Here comes the most important topic of the day, called the PTS, or Preferential Traffic Schedule, where we, Government of India, by an act of Parliament, has told that अरे भाई, यदि आप पहले इंडेंट किया है, इसका मतलब नहीं है कि आप पहले रेक आपको मिलेगा. हमारा जो देश का रक्षण है वो पहले आता है, हाँ या नहीं? हाँ जी. हाँ जी. So let us look at that preferential traffic schedule, which is a very very important topic of our learning today. Are you able to see the screen? Okay. Preferential traffic order for allotment of wagons in force from April 1st, 2023. Whereas, in the opinion of the central government, it is necessary in public interest to do so. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 71, ये मन में रखना, Section 71 of the Railway Act, central government hereby directs that all railway administration shall give special facilities or preference to transport goods as per priority preference mentioned in the order. इसका मतलब है हमारा जनरल मैनेजर्स को, हमारा सीनियर DOMs को, ये रेलवे गवर्नमेंट इज गिविंग एन ऑर्डर दैट अरे भाई देखो, यदि कोई रजिस्टर किया है उसको मन में रख के, और ये भी मन में रख के कि ये ऑर्डर्स में देख के वैसा है, ये ऑर्डर्स विल प्रीसीड. सो इसमें क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस क्या है? कोई पढ़िए, एनीबडी कैन रीड. Military traffic when sponsored by military and approved by railway board. हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा हेल्थ, हमारा देश का रक्षण. इसके लिए किसी का भी हो, कितना बड़ा आदमी भी हो, कितना दिन पहले वो रजिस्टर किया, तो भी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा किसके? मिलिट्री के लिए. क्योंकि हमारा, जब हमारा देश रक्षण हो, आज नहीं तो कल हमारा इकोनॉमी को बढ़ने के लिए व्यवस्था करेगा. मगर हमारा जो बॉर्डर सिक्योर नहीं है, जब हमारा इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वो कैन आवर इकोनॉमी प्रॉस्पर? No, is it not? So what we do, we tell the first priority is military traffic. That is what the meaning of this is. All railway administration shall give special facilities or preference for transport first to priority A. Which is the first priority? Military traffic. Okay. Then after military traffic, for what we are giving priority? Can somebody read it? Goods for emergency relief work for victims of natural calamities like floods, drought, earthquake, etc. When sponsored by an officer not below the rank of Deputy Secretary, central government of central or state government, or a non-official organization nominated by the central state government and accepted by the originating zonal railway or Okay.
That means the second priority of Vikash, please mute your microphone. See, after military, the second thing is, of course, emergency work for a natural calamity or man-made calamity or whatever. Suppose there is a calamity somewhere, can we send a normal goods or do we send relief material? Food, water, clothing, medicines, such other things. Is life more important or economy more important? Okay, you get it, right? So definitely, Life is ah, important. definitely emergency work is more important. See how beautifully we have thought about it. We have, even though we have got a person is indented for a wagon, we still tell, "Arey yaar, wait, you have indented earlier than somebody," but still we have our priority, we have our preference. The first preference is national security, that is why we give military. The second preference is that somebody is suffering somewhere because of a natural calamity. Thousands, tens of thousands, lakhs of people are suffering because of a flood, because of a drought, because of a tsunami, because of an earthquake. For them, they need food, they need clothing, they need water, they need kerosene, food grains, medicines, clothing, bed sheets, tents. Is it not? Boats, ships, whatever, boats for rescue of flood victim. For that, we give the second priority. Then the third one amongst it, all food grains except quota traffic. See, after emergency work, we are giving importance to food. The fourth point, 2.3, levy sugar. That means शक्कर जो है, जो नमक और शक्कर बहुत अवश्य है हमारा इकोनॉमी को और हमारा जो टेस्ट के लिए, उसको आएगा 2.3 में. अभी एक पढ़ लो. पहले होगा मिलिट्री, दूसरा होगा इमरजेंसी रिलीफ, तीसरा होगा फूड ग्रेन्स, चौथा होगा शक्कर. यो भी शक्कर नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेलफेयर स्कीम ओनली. रिमेंबर दैट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो रेशन दुकान में मिलेगा, वो शक्कर को. देन तीसरा होगा कोल ट्रैफिक. वही कोल इज सो इंपॉर्टेंट. Coal is important because coal is used in thermal power plants. Without that, there will be no electricity. Without electricity, 99.9% of the works will not work. Especially for people like Balaji who are addicted to their mobile phones, computers, PCs. Without electricity, I can't stay for half an hour. I don't know about others. They have to tell their own story. So coal is very important because it is a very important raw material, not only for thermal power plants. For many poor people, you still use coal for cooking. So cooking coal and coal for industrial use, that is especially as a raw material for thermal power plants. Okay, coal, coke. Uma, please mute your mic. Coal, coke, including all varieties. So this is the priority number C. Okay. Then इसका कौन स्पॉन्सर करेगा और कौन एक्सेप्टिंग है उसमें है. आई विल शेयर दिस PDF ऑल्सो, यू कैन रीड इट. सो द थर्ड प्रियोरिटी इज C, इज कोल. उसका जो रूल्स है वो आप पढ़ सकता है ना. देन 3.1B, आयरन ओर ट्रैफिक. अगेन आफ्टर कोल, व्हाई इज आयरन ओर सो इंपॉर्टेंट? Iron is the raw material which is used to make tens of thousands of implements, be it farm equipment, be it factory machinery, be it big vehicles. Iron ore made into iron and then converted with adding of carbon into steel is used for all types of industrial works, including construction and machinery. So without that, our economy will capsize or drastically slow down. So we are giving the next priority to coal. Okay, all the small points you can read yourself. Then C 3.1C, non-refined edible salt. Non-refined edible salt and common salt will come next.
After that, fertilizer. After fertilizer, POL. What is POL? Petroleum and other lubricating liquids. They take the next priority. So again, I'll finish this. Priority D. Priority D is all traffic not included in MK mute. So priority D is everything that is not said in A to C. That means all other commodities. Okay. Now I will come back to this. I will just tell a small this thing. First priority military traffic. Second priority relief work for emergency. Third priority all food grains except quota traffic. Then 2.3 levy sugar, that is used for public distribution. Then coal. After coal comes iron ore traffic. After iron ore comes non-refined salt or common salt. Then fertilizer. Then petroleum and other lubricating liquids. After that only priority comes for all the other things. Till here, has anybody any doubts? You can take some 5 or 10 minutes time. You can just mull it in your mind. So, Yeah. Sandhya, tell me. so these indents are also taken through voice, or they are taken manually? 100% indents are taken in voice only. Okay, then the authority is going to be the local senior DCM or railway board? Because it says approved by railway board, so who does the application go to first? See, all demands, okay, all demands are at the divisional level and the zonal level only. That is why they have given here in the top the first line. Now therefore, in exercise of the powers, hereby directs that all railway administrations shall give special facilities. That means senior DOM who is in the division, from there it will start. In his division, whatever demands are there, he has to prioritize according to the PTS. Then PCOM in his zone. You get my point? Like that. So at every level, this PTS is to be followed without fail. So they are only representing the authority of railway board. Yes. Where in our approve, it is approved by railway. Yes. In our books, wherever the word station master is mentioned, it means the booking clerk, the goods clerk, the parcel clerk, the ticket examiner, like that. Here, the railway administration means every person who is allotting the wagons, even station master who is allotting a wagon, if he has the powers, gazetted station masters also can allot wagons. When they allot wagons also, they should follow this PTS only, because it directs all railway administration shall give special facilities. That means any government employee should follow this. They are the authority to sanction. Exactly. Oh, right. Okay. Now, any other doubts? I have got 2 doubts on the chat. What is the difference between programmed coal, non-programmed coal? Okay. MK ने पूछा है प्रोग्राम्ड कोल क्या है, नॉन प्रोग्राम्ड कोल क्या है. प्रोग्राम्ड कोल जो है, कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक है जो कोल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और वो प्रोग्राम करता है. मतलब इस महीने में इतना रेक भेजूंगा, इस 3 महीने में इतना रेक भेजूंगा, वैसा एक प्रोग्राम है, वो है प्रोग्राम्ड कोल. नॉन प्रोग्राम्ड कोल होता है जो अचानक इंडेंट करता है, वो नॉन प्रोग्राम्ड कोल होगा. ओके, so that is programmed coal and non-programmed coal. Shall we go further? Okay. Now, what are the general instructions that are given when following this PTO preferential traffic order? Now, don't take this class lightly, because preferential traffic order is very, very important. General instructions. Traffic offered in block rakes, including clubbed indents constituting a block rake, will be given preference over traffic in piecemeal, irrespective of the class of priority and date of registration. That means, if there are 2 indents A and B, and indent A person has
applied for 21 BCN rice, party B has applied for another 21 BCN rice, whereas party C has applied for 42 BCN rice, then the railway administration shall supply that 42 BCN rice fellow first, because we have been told that traffic offered in block rake, full rake, will get precedence over piecemeal. Understood this point? The word clubbed indents means two people join together from a same station to a same place or to two different places. They book a full rake. They make 21 plus 21, 18 plus 22, like that. Anybody having a doubt in this? Okay. Block rake traffic will, block rake means complete rake, full rake. We have seen the composition of the rake last time, right? Each type of wagon is having a different composition. Some will have 58, some will have 25, some will have 42, like that. That composition is what we are talking here. Block rake will have preference over traffic over piecemeal. Block rake will also have preference over other traffic within the same class of priority. Now, why do we give preference to block rake? Can anybody tell me? Because we get full earnings, no sir? Yes, that is right, Pratap. We will get full earnings in one shot. That is number one. When we Designation will be good. when we load piecemeal, we will need two sets of locos, two sets of guards, two sets of drivers, two sets of guards, two sets of everything, and two sets of fuel also we have to spend. But when we have a block rake, in a single shot we can send the consignment. Okay, that is we will get a lot of benefit. Okay, anybody else? Any doubts? Shall we go further? Okay, so 5.2 says block rake will have preference over other traffic within the same class in the following order. In that we have broken away. We have broken it into A, B, C, D, E, 5 types. Traffic covered by contractual obligation and or guaranteed by any scheme. That means to say, if there is a block rake which is a timetabled train or a promised train, then that will get preference over a non-promised train. That is what we are telling. Then traffic in rakes loaded, this is an important point. You can see this interesting point. Traffic in rakes loaded from a siding or goods shed having round the clock working, it will get preference. Why? Why do you think it should get preference? For more loading. Pardon? For more loading. नहीं अशोक कुमार, आप जो बता रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? फॉर मोर लोडिंग. ओके, मैं क्लैरिफाई करता हूं. यदि एक गुड शेड 6 घंटा से रात 10 बजे तक है और एक रेक ने शाम को 6 बजे को प्लेसमेंट हो गया, ओके पांडे, आपको समझ रहे हैं? जी ओके. ओके, अभी एक 6 घंटा को शाम को 6 घंटा को प्लेस किया तो उसको फ्री टाइम कितना है उस दिन का बचा हुआ है? 4 घंटा. 6 बजे से 10 बजे तक ही वो लोडिंग करेगा. अशोक फ्री टाइम, हाँ फ्री टाइम के अंदर करेगा. हाँ, फ्री टाइम 10 बजे रात को खत्म होगा और हमारा गुड शेड वालों ने लॉक करके चले जाएगा. सुबह उसको जो बाकी 4 घंटा है उसको मिलेगा, हाँ या नहीं? हाँ मिलेगा. हाँ, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जब गुड शेड खोलता है वहां तक वैगन्स क्या रोटेट करते रहेंगे या उधर ही करेगा? अगर राउंड क्लॉक लोडिंग नहीं है तो रुका रहेगा. हाँ, यदि राउंड द क्लॉक लोडिंग का जगह में आप 6 बजे शाम को दिया तो उसको करीबन 1 बजे रात को लोडिंग हो जाएगा और गाड़ी भी निकलेगा, हाँ या नहीं? जी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? ओके. So what we are telling is, places which are having round the clock loading, our wagons will not stay
just like that, waiting for free time to get over. If a rake is placed at 18 hours of today, he will have up to 22 hours only. 22 hours we are closing our good shed and we are going away telling भैया लोडिंग बंद कर लो, सुबह आके पूरा कर लो, बाकी का लोडिंग कर लो. आज अभी अभी 20 वैगन कर दिया, बाकी जो 22 वैगन है वो सुबह आके करो. उसका नुकसान रेलवे को है या नहीं, क्योंकि चुप कर रहा है वैगन. मगर वही रेक को हम राउंड द क्लॉक लोडिंग को दिया तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा कि 1 बजे रात को लोडिंग ख़त्म होगा और राउंड द क्लॉक वर्किंग है, लोडिंग ख़त्म होगा और हमारा वैगन जो है वो निकलेगा डेस्टिनेशन को. हाँ या नहीं? जी हाँ निकलेगा. हाँ, इसके लिए ही. ओके नाउ ओके. ट्रैफिक इन रेक्स having with station having mechanized loading है तो crane consignment, इसका भी हम प्रेफरेंस देगा. क्यों? सेम रीजन व्हाट वी टोल्ड टिल नाउ, बिकॉज मैकेनाइज्ड लोडिंग विल बी क्विकर लोडिंग. ओके देन ट्रैफिक ऑफर्ड फॉर मोर देन 600 किलोमीटर्स, ये जो 600 किलोमीटर है उसका ज़्यादा है. इसका ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा? इसका ज़्यादा है तो हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगा. लाइक दैट ऑल दीज थिंग्स यू कैन see and you can study. One point is there, while following the above general instructions, following days in a week are nominated for priority and premium indent. Wednesday and Saturday अभी चेंज हो गया. प्रीमियम इंडेंट को मंडे एंड फ्राइडे है. मंडे एंड फ्राइडे प्रीमियम इंडेंट का नॉमिनेटेड डेज है. उसका क्लास उसका और एक दिन में क्लास लेगा. प्रीमियम का मंडे और फ्राइडे होगा. वेडनेसडे सैटरडे अलॉटमेंट ऑफ रेक्स एज पर रजिस्ट्रेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास ऑफ प्रियोरिटी. आप एग्जाम में ये पूछेगा कि प्रीमियम का डेज क्या है? मंडे एंड फ्राइडे. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रियोरिटी क्या किस दिन है? वेंसडे एंड सैटरडे. इसका मतलब है वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम प्रियोरिटी देखने का ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड देने का हमारा हक है. प्लीज रीड पॉइंट ए एंड बी अगेन. Wednesday, Saturday, irrespective of priority. Monday, Friday, premium indent. Okay? Any traffic can be accorded preferential loading and movement under a higher priority under special orders issued by Ministry of Railways. इसका मतलब है यदि सडनली गवर्नमेंट डिसाइड किया नो टुडे वी विल दैट प्रेफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर इज चेंज्ड, वी विल से दैट कंप्यूटर पार्ट्स विल गो इनटू priority number B, means over. When government says computer parts are priority number B, that means and we will overtake even relief work and put computer parts first. Okay, that is what is meant by 5.4. Any traffic can be accorded preferential loading and movement under a higher authority priority under special orders issued by Ministry of Railways. ये कब होता है? यदि आप देखा कि जब कोविड था, आप सब कोविड को देखा है. कोविड में क्या था? व्हाट रेलवेज रैन? वी रैन ऑक्सीजन टैंकर्स. रिमेंबर दैट? रिमेंबर ऑक्सीजन टैंकर्स? Yes. So that time railway board issued an order telling that forget priority schedule, oxygen tank wagons will get topmost priority after military. Topmost priority you give to oxygen wagons because people are dying without oxygen. ये जो वार्ड में है, कोविड वार्ड में, उसको ऑक्सीजन चाहना, इसके लिए पहले ऑक्सीजन को भेजो. मिलिट्री ट्रैफिक का बाद forget about relief work, forget about coal, forget sugar, forget everything. Oxygen tanks will get first priority. यदि एक बहुत बड़ा ड्राउट हो गया, पानी ये बारिश ही नहीं है 3-4 साल से, एक बहुत बड़ा ड्राउट है, उस टाइम को क्या होगा? हम बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि पहले वाटर टैंक भेजना है, प्रायोरिटी ले लो. वैसे ये गवर्नमेंट ने बोल सकता है कि प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं. ओके, अनदर 4 minutes इज लेफ्ट फॉर दिस सेशन. Any doubts are there? You can ask me fast. We'll go to the next class. Any doubts? Nobody? Sir, what is club intent? Okay. Clubbed indent. Clubbed indent means
यदि यदि एक आपका नाम क्या है? तीस। हाँ सतीश, सतीश आप एक है, मैं, मेरा नाम बालाजी, मैं एक हूँ, संध्या एक लड़की है और सेल्वी एक लड़की है, 4 आदमी हैं। हम 4 आदमी मिल के एक रेख के इंडेंट कर सकता है। आप बोलेगा कि आप 12 वैगन, मैं बोलेगा 12 वैगन, और सेल्वी बोलेगा 12 वैगन, संध्या भी बोलेगा 12 वैगन। हम 4 आदमी इकट्ठा करके एक रेख को इंडेंट कर सकेगा, वो है क्लब्ड इंडेंट। समझ में आया? एक या एक का अधिक कस्टमर ज्वाइन होके एक रेक मांगना, वो क्लब्ड इंडेंट होगा। क्लब्ड कस्टमर, क्लब्ड इंडेंट वही है। सर पीस मिल ट्रैफिक में क्या था? क्या क्या? पीस मिल ट्रैफिक। ओके, पीस मिल ट्रैफिक, पीस एनीथिंग, मिल। हाँ एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन फुल रेक, एनीथिंग अदर देन 42। इसका आधा जो होता है ना 21 वैगन्स, जो 21 वैगन्स पूछेगा उसको बोलते हैं पीस मिल। 3 वैगन, 10 वैगन, 12 वैगन, पूरा रेक छोड़ के कौन को क्या तो भी है वो पीस मिल होगा। हाफ रेक को भी पीस मिल वैगन बोल सकते हैं। यस यस, हाफ रेक इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पीस मिल। ओके सर। Okay. Any other questions? Shall we close the class and go to the next session? Any 2 minutes is there here? Any other doubts are there? Okay. So I'll go to the next session now, next class. So can I ask something? Yeah, tell me, ask. That is why the class is there. Actually, just now you clarified something regarding that at 22 hours when the goods shed is closed, after that if the loading is stopped. I didn't understand that. Okay, let me give you a small example. There is a goods shed A. Okay, there is a goods shed A. Okay, I'll open an Excel sheet. You can see it on my screen. Are you seeing my Excel on the screen? Are you seeing an Excel sheet on my screen? Yes, sir. Okay. See, this is station A. Its working hours is 6 to 22. Okay. There is another station B who is working round the clock. Okay. Okay. Now this is one station and this is the second station. Now if I give 42 BCM here at 18 hours and the free time is 8 hours, 8 hours free time. So what is the time that he will have, this fellow will have, and what is the time this fellow will have? Can you tell me? Means he will be allowed only to load up to 22 hours and after that up to 22 he'll have- hours. When will, how many hours are over up to 22 hours? 18 to 22, how many hours? How many hours? 18 to 22. 4 hours. 4 hours. 4 hours over here. The balance 4 hours from 6 Okay. o'clock morning to 10 o'clock morning. Next Agreed? day. Agreed? Okay, okay. So Yes, loading, got you. Got you. but here if I give the same, oh,
Okay, Selvi. Sir? Yes, sir. Okay, so if this fellow I gave the same at 18 hours, what time he has to finish it? 8 hours, when it will be over for him? For him, it will be like 20, 22 19, in the 20, night, 2 o'clock. 21, 22, 23, 24, 1, Huh. 2, 2 a.m. 2 a.m. Yes. So this fellow finishes it at 0200 a.m. This fellow finishes at 10 a.m. Here we are between this to this. What is the hours we have lost? 8 hours. Yes or Correct. no? So if I give to this fellow, round the clock fellow, the fellow I am marking in red, if I give it to this fellow, by 2 o'clock my loading will be completed and my rake will start moving. Correct. Yes. When does railway get money? Railway gets money only when the wheels are moving. When the wheels are idle, railway Correct. will not get money. So which do you think we should give preference? Round the clock wala. Fantastic. You got your answer. Thank That's all. The concept is simple. We just have to understand the concept, then we will know. No, I don't know goods working, so that's why. Yeah, I know. I get it. I get it. That's why I'm telling. Okay. Thank you, sir. Okay. Anybody ready to match the following? Sandhya, can you try Yes, it? sir. Satish, Yes, sir. Satish, bolo. Military traffic when is sponsored by Mill Rail and approved by railway body priority A. Priority A. Very good. 1, 5. Goods of emergency relief is priority B. Very good. Coal, edible salt, raw materials is also priority C. Yes. Very good. All traffics not included priority A to C is under priority D. Very good. All commodities are grouped into E. No. No. All the commodities are grouped into? All the commodities are grouped into This one. Four prep. all priority A to D. That's all. Okay. आज का क्लास आप 100% अंडरस्टैंड कर दिया. Okay. Sir, what's quota traffic? See, quota traffic means traffic which is already planned. We will tell, because coal plants, steel plants, these other things, they have so much demand that we cannot even supply even if we work round the clock with them. So we fix one quota and say for a month only so much we can load. That is called quota. Yes. Okay, sir. Now I remember. That first class they went told. Yeah. Yes. Thank you. So fill up the blanks. Railway administration give priority preference mentioned in which? Priority section 71. Preferential traffic order. Traffic schedule. Okay. Traffic offered in single point block rakes will be given preference over 2-point multi-point rakes and mini rakes within the same class of Classification. priority. Priorities. Traffic offered for a distance of more than dash kilometer will have preference over other traffic. 600 kilometers. 600 kilometers. Yes. COM is authorized to reserve and notify maximum of 2 days in a week for allotment tracks as per PTS, preferential traffic schedule. That's all. Okay. Any traffic can be accorded to.
Okay. So any traffic can be accorded preferential loading and movement under a special priority. Okay. Under special orders. Under a higher priority. Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So that's about this particular preferential traffic order. That's all. We don't have anything more to say on that. And now let us go for some other new thing. Okay. So rating of goods traffic. This is a very very important topic that we are going to discuss now. Okay. Now. Once we do that, let me see what I want to take now. I'll just see what we have finished this. Okay, we have finished classification of goods. How goods are classified? Have we taken that? We had seen the table, sir. No, I meant have we taken this class, this particular No, one? not this. No, we saw only the classification table where it was showing owner list. Have I taken this class? No, this one no. We have taken this class? No, I don't think. No, sir. No, sir. Have we discussed why things are charged differently? Okay, now let me take that class. That is called classification of goods. Okay, so why do we charge differently for different goods? When a person comes for reserving a ticket, we don't ask him whether he is a Hindu, Muslim, Jew, Christian, whether he is 40 years, whether he is 60 years. We give him a ticket collecting a fare, right? Why don't we do the same thing for goods, telling you take whatever you want for 1 ton from one place to one place, we will charge this much. Why we are not telling that? That means you see this Excel. Okay, is my Excel visible? Yes, sir. ఓకే పూర్తిగా ఇవ్వచ్చు కదా ఉంటే ఉంటే ఎవరప్పా అదే? ఎవరది? నాయనా మ్యూట్ చేయండి నాయనా. చాటింగ్ అడిగినారా సేమ్ ఫోన్ పే అని చెప్పినారా ఓకే చేయండి పార్టీ తీసుకోండి నేను ఇక్కడ సేమ్ Okay, now do you see these commodities on your screen? Yes, sir. So rice, wheat, car, electronic goods, cement, steel, paper, these are some of the commodities. Now when somebody called Balaji or Abbas or Selvi or Stephen or Gauri, whoever comes, we are charging the same fare. Forget concessions, we are charging the same 150 rupees, or we are telling no Balaji will get 60 rupees, Abbas will get 90 rupees, Selvi will pay only 75 rupees. Are we telling that? What are we telling? No, we charge We charge equally for people going by for train. the 10th of class. Yeah, for that particular class we charge the same thing for anybody, right? Why don't we do the same thing for rice, wheat, car, electronic goods, cement, steel, paper? It will affect the economy. It will have an impact on the economy That if is we charge. That's a very good thing. That's an excellent statement. Any other Thank you, sir. any other
anything else? Come on. पार्शियलिटी, बताइए बताइए भाई. सर पार्शियलिटी, क्या क्या? पार्शियलिटी रेलवे की तरफ से पार्शियलिटी मानी जाएगी सर, अगर अलग अलग तरीके से चार्ज करेंगे नहीं, एक मैं बोल रहा हूँ कि partiality मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग चार्ज करेगा इन सबको. क्यों? आदमी को आदमी को एक ही रेट में चार्ज करेगा, मगर ये जो मटेरियल्स है, यदि आप ये सबको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए हम अलग अलग से चार्ज कर रहा है आजकल पहले से. क्यों, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, इसका वैल्यू ऑफ जस्टिफिकेशन. कास्ट, वैल्यू ऑफ कास्ट, Value. Okay, first thing is what shall be told, that is economy. Okay, very good. Then It's not same type of wagons used. yeah, The that's a price. fantastic thing. That's a good way. Type of wagon. Okay, then cost of the commodity. cost of transport, not the commodity. Okay. Okay, now let us discuss about this. Let us deliberate about this. Okay, now food grains and electronic goods. What is the difference between this and this? Electronic goods, I will put a different color, and rice and wheat, I will put a different color. Which do you think is more important among them for general public? राइस एंड व्हीट Food सर. grain. डेफिनेटली फूड ग्रेन्स. इसका मतलब है जो फूड ग्रेन्स है वो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ. व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ टू सर्वाइव? Food. नो, एयर. Air. Air is one, second is water, third is food. So without air you cannot live for more than 4 minutes, without water you cannot live for more than 2 days, without food you cannot live for more than 15 days. That is what science has told after research. Now if we charge the same thing for rice and wheat what we charge for electronic goods, transportation already takes up a lot of money when you consider the price from the manufacturer, that is from the field to the table. Okay, खेत से जो आप टेबल से खाना खाता है उसका आप अभी आज ही देखा तो ही बहुत फ़र्क है. जो खेत में जो आ रहा है वो 10 रुपये किलो टोमेटो है, तो आपका टेबल का ऊपर आने का टाइम पे वो 100 रुपये होगा, है ना. उसमें जो मिडलमैन है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारा कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन में होगा. यदि आप जो राइस एंड व्हीट को इतना कॉस्टली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है उतना कॉस्ट से आप ट्रांसपोर्टेशन लिया, तो क्या हमारा जो गरीब आदमी है, वो जो इंडिया है ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें जो आदमी है वो उतना पेमेंट करके वो खाएगा? नहीं ना. नहीं खाएगा. नहीं खाएगा, क्या होगा? बीमारी हो जाएगा. जब भी बीमारी हो जाएगा कहाँ जाएगा? अस्पताल जाएगा. अस्पताल जाने से क्या प्रॉब्लम है? हमारा जो रिसोर्सेज है वो कम करके होगा, और ये जब आदमी बीमारी होगा उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा और हमारा इकोनॉमी में बहुत असर पड़ेगा, है ना. इसके लिए हम एक एक कमोडिटी को एक एक क्लास देगा और उसको इतना चार्ज करेगा. उसमें क्या है? पहले होगा द इकोनॉमी. जो हम अभी डिस्कस किया है वो इकोनॉमी है. इकोनॉमी का मतलब है कि जो यूज़फुलनेस टू द इकोनॉमी. हमारा जो भारत देश है उसका जो पॉपुलेशन है उसका क्या ज़रूरत ज़्यादा है. फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, ये सब ज़्यादा है. इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम कम रखना, ज़्यादा रखना? कम रखना है. फैंटास्टिक, कम रखना. और नेक्स्ट इकोनॉमी का, इसका वैल्यू भी मन में रखना. वैल्यू टू द इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी का वो वैल्यू कितना देगा, मन में रखना. और जैसे संध्या बोला है टाइप ऑफ वैगन, ये टाइप ऑफ वैगन में मेरा जो एग्जाम्पल होगा
ये है तेल का वैगन। तेल का वैगन में क्या ले सकेगा आप? पानी ले सकेगा? टैंक वैगन। टैंक वैगन में क्या लेगा आप? ऑयल, ऑयल क्या ऑयल? ज्यादा नहीं। पेट्रोल सर, पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल। क्या पेट्रोल एंड डीजल वैगन में आप पानी ले सकेगा? नहीं सर। राइस ले जाएगा? No. नो No. सर। सीमेंट? नो सर। No, sir. इसका मतलब है जो एक वैगन एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है उसको हम यूटिलाइजेशन सिर्फ 50% कर सकता है ना? नहीं, क्योंकि उसमें और कोई चीज डाल सकता नहीं। सो ऑयल को हम ज्यादा कॉस्ट करना, कम कॉस्ट करना? ज्यादा सर। मगर आप ये मन में रखो, यदि बहुत ज्यादा कर दिया अब क्या होगा? वी विल सफर। क्यों? क्योंकि फ्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। डीजल, पेट्रोल और जो फ्यूल्स है वो बहुत एविएशन फ्यूल वो सब है, वो हमारा इकोनॉमी में बहुत असर पड़ेगा। इसके लिए हम बहुत जानकारी से सोच के करना कि कितना रखना, बहुत ज़्यादा भी रखना नहीं, बहुत कम से भी रखना नहीं। ये ऑयल टैंक वैगन, यदि आप, ये है ऑयल टैंक वैगन है ना। मैं एक दूसरा शीट लेता हूँ ऑयल टैंक वैगन का। मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट से ये ऑयल टैंक बैंगलोर को लेके आए ऑयल। ओके, अंडरस्टूड? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस, ओके। इसका मतलब है ये मंगलोर पोर्ट से बैंगलोर तक हम लेके आ रहे हैं ऑयल टैंक। ये वैगन जो है मंगलोर पोर्ट से बैंगलोर ऑयल लेके आने का बाद ये क्या यही टैंक में ये हम पहले देखा कि कुछ भी और वस्तु नहीं डाल सकता। यही वही ऑयल टैंक को बैंगलोर टू मंगलोर भी लोड कर सकता है, हम लोड कर सकता है। What, sir? Your voice was breaking. Okay, see, we are bringing oil from Mangalore port to Bangalore. Okay. Can we use the same wagon again from Bangalore to Mangalore to carry what? The same product? Will we carry oil from Bangalore to Mangalore, where Mangalore itself is having a refinery? Yeah, no. No, it is called carrying coal to Newcastle. Do you carry coal to where it is produced? That means this oil tank wagon which is bought oil from Mangalore to Bangalore has to go Empty. empty. It has to go empty in the return direction. Yes or no? Yes, sir. But the investment in case of oil tank wagon is the same as that of a BCN wagon which can carry rice. Whereas if you reverse it, if you say that from Mangalore port to Bangalore one rake is carrying let us say rice, it is carrying rice, can it go back in the same direction, return direction, carrying something called cement? Can it? Yes, sir. Yes. Maybe. Yes. Yes, definitely yes. Because Bangalore wants rice, and in Bangalore we have got cement production, we are carrying back to Bangalore. So, do you think our railway wagons are going to lose much in this arrangement or in this arrangement? When we carry oil, railway is losing much, or when we carry rice, railway is losing much in the above example? Oil. That is why we are charging based on the type of wagon. Okay. If the wagon is oil tank wagon, it is called a special type wagon, which can be used for only one particular type of commodity, that too in only one direction.
if you are having a big shop which is selling vegetables daily, do you go to the market and buy vegetables, or do you use the same vegetables which is available in your shop? Obviously available in our own shop. That is common sense, right? So same way, when you bring oil from Mangalore refinery to Bangalore, you don't use the oil tank wagon to send it back to Mangalore with oil. But if you use a BCN wagon for rice, the same wagon can go back carrying cement or any other commodity in the same BCN wagon. So railway is gaining. So again, the type of wagon is important. Then the cost of transport. For certain commodities, let us say you are transporting let us say explosives. For explosives, can you cram it up with explosives, or can you carry only limited amount in a wagon to minimize dangers? Yeah, you have to carry it safely. To carry it safely, you have to minimize the amount of quantity there. Yes or no? Yes. So that wagon which you can transport explosives should be well protected. You have to put 2 or 3 dummy wagons next to the engine, 2 or 3 dummy wagons that side of the engine. So do you think the cost of transportation will increase or be the same? Will increase. Yeah, that is why in the case of our cost and pricing, for a classification of the goods, commodities are classified into different types of classification. Okay, goods are classified with the base rate 100. The base rate is 100, and below that is called LR1, LR2, LR3, etc., going down up to 145A. And above 100, we have got 110, 120, 130. They are called normal profit, and these are called high rated. That means one commodity may be charged at 200 class, one may be charged at 150 class, one may be charged at LR2, and one may be charged at 130. This is from the bottom most to the topmost. The reason why they are charged differently is because its value, its usefulness to the economy, the type of wagon used, the cost of transportation, and these factors which I have already discussed. We cannot keep it too high, we cannot keep it too low. If we keep it too low, then the problem is that railway is also a organization which is getting its money from the public. If we become too low, then we will not even get our salaries, we have to go bankrupt. Yes or no? If we keep it too high, the problem is that people will suffer. And if we keep it too high, it also means that nobody will come to railways, everybody will go to road transport or shipping transport. So judiciously we have to think very carefully how much to charge, what the lorry people are charging, what the rail transport will face from other people like road transport, ship transport, other transporters, whether the economy will benefit from my charging more, what will be its economical effects, that means on the inflation. You know what is inflation is, economics people will know what is inflation. Whether people will go hungry if at all we charge too much, whether there will be a political issue if we charge too much. Yes or no? All these things we have to take into consideration when we decide the cost pricing. So the pricing of goods is a very interesting subject. It is not like a ticketing. In ticketing, for any person, we are not talking about concessions, normal, for any ticket, one berth इतना पैसे दे दो, इतने इस दर्जे में आप जाने को इतना पैसे दे दो. मगर ये हम गुड्स में कर नहीं सकता. एक एक आइटम को, यदि वो चावल हो या वीट हो या कार हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सीमेंट, स्टील, पेपर, ऑयल, वॉट एवर इट इज़, हमारा जो चार्जिंग है वो इन 4-5 आइटम का होगा. इकोनॉमी, वैल्यू, टाइप ऑफ वैगन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, व्हाट द ट्रांसपोर्टेशन कैन बेयर, दैट इज़ वन, व्हाट द ट्रांसपोर्टेशन कैन बेयर. इसका मतलब है ये क्या, ये हमारा जो रेल का, बस का वो है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमको, इन सब सोच के ही हम कर सकेगा. Okay, so it's a very very beautiful
way of looking at it as to why we charge goods differently. So the base rate is 100. Below 100 we have low rate 1, low rate 2, low rate 3, low rate 3A, and then below that 100A and 120A up to 145A, which are all called low rated. Then we have normal profit 110, 120, 140 up to 160. Then 165 to 200 we have got the high rated commodity. The classification is based on what we have discussed till now. Okay, now it's time to wrap it up. We will take a few questions. Anybody has got, you can put up a few questions and then we will close it. Anybody has questions? Any Sir, questions? last point, sir. What the traffic can bear? Can you elaborate this? Yes, what the transportation can bear means whether what is the charging done by other users like road or water or air transport, and whether we can bear at the cost in which they are sending, and whether we can charge little more or little less than them, and whether it will be worthwhile. ओके यदि हम बहुत ज़्यादा कर दिया तो रोड 100 रुपये क्विंटल को चार्ज करेगा चावल को, हम 200 रुपये चार्ज करेंगे या 90 रुपये चार्ज करेंगे या 50 रुपये चार्ज करेगा, है ना? ये सब मन में रख के करना. That means the comparative study. Exactly, it is a comparative study. ये अचानक दो आदमी टेबल पे बैठ के नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये क्या नया कमोडिटी आया है, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन को 1 टन के लिए 10,000 रुपये चार्ज करो. वो बीवी का साथ कुछ बैठ के खाना खा के डिसाइड करने का बातचीत नहीं है. ये बहुत सोच समझ के करना है. ये सब मन में रख के इकोनॉमी को क्या असर पड़ेगा, वैल्यू का है, टाइप ऑफ वैगन क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कितना बेयर करेगा, ये सब मन में रख के करने का चीज़ है. इसका मैं अगला क्लास में बताऊंगा डिटेल्ड में कि कैसे होगा वो, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. एनी डाउट्स? No doubts? No, sir. Okay. So now we saw the classification, right? This is the classification of goods. Classification of commodities have been given in Goods Tariff Part 1 Volume 2 under 25 main heads. They will ask this in the exam. Classification of commodities is given in which book? Goods Tariff Part 1 Volume 2. Let me see if I have that book. Give me a minute, let me search for that. If it is there, I will show it to you. It is under 25 heads. How many heads are there? 25 main commodity heads. The classification of different commodities under the main commodity will be the same for different physical forms and shape of and different conditions. This I will explain it to you when I show that book to you. The total number of classes is 24. It starts from LR3A, class 100, 140A, 160, general tariff, like that. This is the table. These are the tables. Suppose one new commodity is coming in the market. How do you charge till we fix the charges? आज एक नया कंपनी खुला है, वो मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मोबाइल फ़ोन्स आप आज तक मैं भी देखा नहीं, आप भी देखा नहीं, समझ लो. और ये आके बंदा बोल रहा है कि भाई मैं वैगन में भेजने के लिए चाह रहा हूँ, आप कल मेरा ट्रांसपोर्टेशन शुरू करना है. ओवरनाइट कैन वी डिसाइड द फ्रेट? नो. सो टिल द डिसीजन कम्स वी हैव टू हैव अ मिनिमम चार्ज, दैट इज कॉल्ड द फॉर टैंक वैगन. एनी कमोडिटी लोडेड इन टैंक वैगन 200 क्लास, एनी कमोडिटी इन फ्लैट वैगन 180 क्लास, एनी कमोडिटी इन ओपन वैगन 160 क्लास, एनीथिंग इन कवर्ड वैगन 150 क्लास. ये कब तक चलेगा? ये चलेगा सिर्फ जहां तक हम वो एक कमोडिटी हेड में इंक्लूड नहीं किया. ये होने का 1 हफ्ता हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है. जहां तक ये डिसीजन नहीं लिया वहां तक ये जो कमोडिटी है टैंक वैगन में बेचने से 200 क्लास में करेगा, फ्लैट वैगन में 180,
ओपन में 160 और कवर्ड में 150 में करेगा. Okay, so goods tariff, let me see if I am having goods tariff. Yeah, this is goods tariff part 1 volume 1. Okay, I am sorry, part 1 volume 2 number 49. Oh yeah, see, can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Goods tariff part 1 number 49 part 1 volume 2 contains general classification of goods which has the authority of central government. Okay, this is the book that we are seeing. So it will have main heads. Okay, these are the main heads. See, main head and general tariff. Okay, so okay, see, okay, general classification, group number 3, bricks and stones. This is the main head, bricks and stones. Under bricks and stones we have different commodities. What are they? Ballast, ceramic tiles, chaklis, flooring stones, granite, gravel, kunker, marble chips, millstone, quartz, all these things. That means this is the main head. The main head is bricks and stones. The other parts are all these things. That means here he tells the classification of different commodities under the main commodity set will be the same for different physical forms. That means to say, here you can see that under bricks and stone का मतलब पत्थर क्या तो भी हो, whatever be the type of पत्थर में भी granite, पत्थर में भी kuka stone, पत्थर में भी marble, maybe quartz, maybe sanitary ware, slate, stone, all this will be charged under the same class called 150. Can you see this 150? Yes, sir. That is the class. So if you see this book, you will know under what class we are charging. Like that, you name any commodity. Can anybody name one commodity? Any commodity, tell me a name fast. Ballast. Soda ash. Soda ash. See here, caustic soda and soda. Under this we are having soda ash here. It is charged under class 140. 140. Any other thing? Any other commodity? One commodity you tell yaar. Food grains. Huh? Food grain. See here. Food grains, flours and pulses. They are all under the same head, table number 9. Atta, bajra, barley, besan, channa dal, grains, pulses, gram dal, jowar, maida, meat, paddy, peas, rice. Can you see? Urdat dal, tuar dal, wheat. They are all under 130A class. As you can see here, 130A is, what is 130A? 130A is a very low class. See here, it's a low rated commodity. That means food grains are important. That's why we are charging at a very low class called 130. Okay. Any other commodity? Granite, sir. Huh? Granite. POL. Pardon? POL. POL, petroleum. Ama sir, petroleum.
See here, this is petrol. Petroleum products under the main head 18. Alkylite, aviation fuel, crude oil, diesel oil, furnace oil, hexane, light butane, naphtha, petrol. Petrol is here, motor spirit, toluene, xylene. All these are under class 180. 180. 180A. LPG, liquefied petroleum gas, 165 class. Okay, meeting is ending now. Any other doubts are there? Shall we close? Yes, sir. Yes, Anybody having doubts? Okay. We'll close. Goodbye. Thank you. Somebody is asking a question. Sir, फॉइस में रजिस्टर करते समय भी फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ेगा क्या? Yes. धर्मात्मा, forwarding note is a very very important document, whether you do it online or offline. Online also there is a forwarding note which you have to fill it up, because forwarding note is a court document. We have seen it last time. So forwarding note भरना ही, online भी भरना. Any other questions? Okay, good. Thank you. Good night, all of you. Take care. thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.